Hello everyone, welcome to PTE Reorder Paragraph Real Exam Question Series. This is 32nd video in this series. It means that we have already discussed 31 real exam questions जो आपके एग्जाम में आते हैं, and we have discussed the strategies, tips, tricks, how you can solve them within the time frame. So let's get started. First things first, that PTE is now accepted for study, work or settlement in UK, so you can achieve your dream through PTE, and 90% of Canadian universities now accept PTE, and PTE Home is a new test which is accepted for family visas in UK. My name is Bhrat Brij and I have scored a perfect 90 in all the 10 skills of PTE. And in this video series, we discuss the reading hacks, strategies, tips so that you can also crack PTE reading or PTE in your first attempt, because there is no point आप money waste करते रहिए papers पे but without knowing the tricks, strategies, how to crack PTE. And we post such informative videos on a regular basis, so do not forget to subscribe to our channel. PTE reading is of 32 to 41 minutes. So आपको manage time खुद करना होता है, individual timers questions के नहीं होते हैं, and it is not scored out of 90, it is scored out of 47 marks. And it has 5 question types, and जो हमारा आज का question type है, topic है video का reorder paragraphs, that is the third question type in this order. Now let's see the scoring. If you see जो reading module है, जो उसकी scoring है, that is just of 47 marks. And reorder paragraphs are very important because 6 marks contribute करते हैं, especially if you are looking to target 79 plus. So if it means that if you will get 3 reorder paragraphs, and they will be of 2 marks each, okay? And if you are getting 2 reorder paragraphs, they will be of 3 marks each. Now, what is the strategy? First of all, you need to manage the time well. Using a big data analysis, we found out that you can spend a maximum of 2 minutes on in reorder paragraph. अब in 2 minutes में आपको काफ़ी tasks करने होते हैं. Like first you have to skim it to find independent line, then you have to read the lines, then you have to make pairs. Scoring pairs पे होती है reorder paragraphs की. You can watch the first video of this series if you want to see everything in detail. And then you have to confirm the pairs. This is today's reorder paragraph. And as usual, I'm going to give you 30 seconds to skim through this, and then we will discuss it. Okay, so now you know that we skim the paragraph first for understanding the gist, to find independent line, and to find last line. Okay, so let's get started. Previous lecture courses in medicine had included a series given by Peter Mark Roget, and then a physician at a Manchester Infirmary, but better known for his later Thesaurus. Okay. So यहाँ पे क्या ये independent line हो सकती है? The answer is no. Why? Because यहाँ पे previous lecture courses की बात हो रही है. मतलब कुछ ना कुछ पहले lectures की बात होगी, तभी तो previous की बात करोगे. आप सबसे पहले पुरानी थोड़ी बात शुरू करते हो. आप पहले अभी की बात करते हो और उसके बाद आप previous lectures की बात करते हो. अब इसमें हमारी CO strategy भी use होगी. Let's see that. What is CO strategy? That is chronological order strategy. अब इसमें timelines दी हुई हैं. If you see 1804 to 1808, 1814, 1870. अब जनरली हम क्या कहते हैं, chronological order में आते हैं. तो पहले 4 की बात होगी, 1804 वाले सेंटेंस की बात होगी, फिर 1814 की बात होगी, फिर 1870 की बात होगी. बट ओवर हेयर दिस इज अ स्लाइट मॉडिफिकेशन, बिकॉज यहाँ पे देखिए 1804 चाहे टाइमलाइन के हिसाब से पहले है, बट यहाँ पे प्रीवियस की बात हो रही है. सो इसीलिए अब थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर स्ट्रैटेजी से 1804 स्टार्ट में नहीं आएगा.
या तो वो 1814 के बाद आएगा क्योंकि हम प्रीवियस की बात कर रहे हैं, या वो 1870 के बाद आएगा। इतना डिफरेंस नहीं हो सकता क्योंकि आप 1814 इंट्रोड्यूस कर चुके हो। ओके, 1814, 1870। अब 1804 किसके क्लोज है यादा प्रीवियस के लिए? 1814 के पास है। तो थोड़ा सा आपको हिंट ऑलरेडी मिल गया कैसे हमने इसको पेयर करना है। ओके, now let's see the second line because right now we are looking for independent lines. Formal medical education in Manchester began in 1814 when Joseph Jordan opened the first anatomy school in English provinces. Okay, so yes, this looks like a independent sentence क्योंकि वो बात कर रहे हैं कब स्टार्ट हुआ, began की बात हो रही है, मतलब इनिशियलाइजेशन की बात हो रही है, फर्स्ट की बात हो रही है, मतलब शुरुआती बात हो रही है। तो यस, दिस लुक्स लाइक एन इंडिपेंडेंट लाइन। In London, the private anatomy schools, which had competed with each other for decades, became incorporated with the hospitals, but in the previous provinces, private medical schools continued beyond 1870, using the hospitals for clinical teaching but not formally attached to them. Okay, this also looks like an independent sentence, ठीक है? But उससे पहले I want to teach one important grammar rule because grammar will be helpful for your writing. अब यहाँ पे देखिए विथ से पहले हमेशा कॉमा आता है और दैट से पहले कभी भी कॉमा नहीं आएगा, विच इज योर नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, राइट? सो इसीलिए आपका विथ से पहले कॉमा आता है. दिस इज एन important grammar rule which can improve your marks, and these little tips and tricks we teach to our students when they take grammar course from us, which is free of cost for them when they enroll for in-institute or online coaching. So in London, the private anatomy schools, which had competed with each other for decades, became incorporated with hospitals. ठीक है, so यहाँ पे अब anatomy schools की बात हो चुकी होगी, okay? Because यहाँ पे the use हो रहा है, पर कहीं यहाँ पे क्या ये independent line हो सकती है? The answer is no, because एक तो chronological orders के basis पे 1870 से start ही नहीं हो सकती है. Second, द प्राइवेट की बात हो रही है, मीन्स वो स्कूल्स कहीं ना कहीं पहले इंट्रोड्यूस हो चुके होंगे और कहाँ हुए हुए? यहाँ पे ये देखिए द फर्स्ट एनाटमी स्कूल, यहाँ पे स्कूल की बात हो रही है. एंड देन डिपेंडिंग अपॉन अ टीओ स्ट्रैटेजी यू नो दैट कि ये वाली लाइन इससे बाद में ही आएगी. ओके, so that's why we are going to ignore this line based on our two strategies. Okay, now Jordan, अब यहाँ पे देखिए Jordan यूज हो रहा है. Again from our BS strategy which is brought to specific, आपको पता है पहले फुल नेम आएगा एंड उसके बाद आपका शॉर्ट वर्जन स्टार्ट होंगे. तो फुल नेम कहाँ पे है जॉर्डन का? ओवर हियर, जोसेफ जॉर्डन. तो इसीलिए ये भी इंडिपेंडेंट लाइन नहीं हो सकती. जॉर्डन हाउएवर ऑफर्ड डाइसेक्शंस as well as lectures and medical education proved good business. Okay, so we have now find out an independent line. Let's move on, drag this independent line over here. And now let's see which would be the second line. अब because we have seen 1814 की बात हो चुकी है, जोसेफ जॉर्डन की बात हो चुकी है कि उसने पहला एनाटॉमी स्कूल ओपन किया इंग्लिश प्रोविंस में. अब हम प्रीवियस की बात कर सकते हैं, राइट? रिमेंबर जो अभी हमने कहा था कि 1804 और 1808 वाला जो हम जस्ट वी डिस्कस्ड अ लिटिल व्हाइल अगो. सो प्रीवियस लेक्चर कोर्सेज इन मेडिसिन, क्योंकि यहाँ पे आपकी बात हो चुकी है मेडिकल एजुकेशन, मेडिसिन की बात हो चुकी है फॉर्मल. So that's why over here this makes sense as per our SO strategy, which is subject object strategy, which had included a series given by Peter Mark Roget, then a physician at Manchester Infirmary, but better known for his later Thesaurus. Okay, so we have selected this pair. नाउ अब इन दोनों में से आपकी कौन सी लाइन आएगी? वी हैव टू चूज जस्ट वन लाइन एंड देन जो लास्ट लाइन बच जाएगी दैट विल बी द लास्ट. ओके, सो अब आप यहाँ पे देखिए आपने जोसेफ जॉर्डन इंट्रोड्यूस कर चुके हो, राइट? अब डिपेंडिंग अपॉन आर टीओ स्ट्रैटेजी, व्हाट इज टीओ स्ट्रैटेजी? पहले एक टॉपिक की बात होगी फिर हम कुछ और टॉपिक की बात स्टार्ट करेंगे. सो यहाँ पे आपने पहले जॉर्डन की बात की तो यहाँ पे प्रीवियस बात हो गई, तो अब किसकी बात होगी? फिर से जॉर्डन की बात ही होगी. जॉर्डन हाउएवर, क्योंकि कंट्रास्ट यूज हो रहा है.
offer dissections as well as lectures. Dissections भी हो रही हैं और lectures भी दे रहा है. And medical education proved good business. And medical education एक अच्छा business prove हुआ. अब another reason क्यों ये पहले होगा, इस पे आप देखिए यहाँ पे dissections anatomy schools क्या होते हैं, dissections जहाँ पे होती हैं. ओके राइट, लेक्चर्स की बात भी हो रही है, dissections की बात भी हो रही है और मेडिकल एजुकेशन की भी बात हो रही है. और यहाँ पे वही बात हो रही है कि 1870 में प्राइवेट मेडिकल स्कूल्स थे, continued beyond 1870 using the hospitals for clinical teaching but not formally attached to them. Okay, so why? Because depending upon our TO strategy, so we had to talk about the topic of Jordan, because इस line में ना Jordan की बात हो रही है ना आपके Peter की बात हो रही है. So we have to conclude this topic over here. So that's why we are going to fit this here, and then जो last में line बची हुई है we are going to put it in the last. So that's how we arrived at. Let's see if all the answers are correct. Yes, all the answers are correct. So you saw our strategies are very useful and helpful. So what are our complete strategies? We find independent line. There are certain rules like we have seen today, the rules for finding independent line. उसके बाद BS strategy, you had seen its implementation today, brought to specific strategy. CO strategy, chronological order strategy, you have seen its implementation. Connectors के थ्रू भी हम अपने pairs बना सकते हैं. TO strategy, you saw its implementation today, topical order strategy. Then AB rule, abbreviation rules, SO strategy, subject object strategy, you saw its implementation today. And last sentence rules, there are certain rules from which we can find out the last sentences also. Always remember you have just 2 minutes to solve your reorder paragraphs. In first 30 to 60 seconds you are going to skim the content. आपको एक independent line find out करनी, and then you have to find a conclusion line. And in next 30 to 60 seconds look for clues, find pointers like years, however, firstly, examples, and then use process of elimination also. All the strategies which we teach are validated and proven strategies. And what is the proof? The proof is in the ticker below of the students who have achieved their target scores. And these are some of our latest success stories where students have also scored 90 each in all the modules. So if they can score, you can also score. Okay. So if you have any question or doubts, do not hesitate to contact us on WhatsApp at 8699 121 121. And we post such informative videos on a regular basis, so do not forget to subscribe to our channel. We give wings to your dream.